बैलेंसिंग की there is no worry. मेरी आदत साइड खराब। प्रोडक्ट नहीं आते टाइम the wing doesn't matter. So this chlorido, the chloride is being चलो पहले replaced ग्रुप by इसको the NH2, right? ये ले And लो what is this compound called पानी। as? Aniline. जाओ बजा के नीचे जाओ। Cu2O, cuprous oxide. क्लियर? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं? बिकॉज आपको पता है ये बॉन्ड को तोड़ना ही बड़ा मुश्किल है और ये रिएक्शन में वी आर एबल टू डू देम। देन सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। क्लोरोबेंजीन, CuCN in presence of pyridine, 475 Kelvin. We have formation of benzene, nitrile. बेंजीनो नाइट्राइल बोलते हैं इस कंपाउंड को। नेवर। KCN की जगह NaCN कर सकते हैं। What CuCr is altogether different. तो ट्रांजिशन मेटल का साइनाइड हुआ ना, डन है ये। नाइट्राइल, NITRILE। हो गया। यस और नो? लिखो नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स लिखो फर्स्ट विद मैग्नीशियम। विद मैग्नीशियम करो रिएक्शन। एक हेलो एल्केन को मैग्नीशियम से रिएक्ट करो, हेलो एरीन। ये हमने हेलो एल्केन्स में भी किया था। व्हाट आपको होता है Br होना चाहिए यहाँ ना, either it cannot be फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। So when an haloalkane or haloarine is reacted with magnesium in presence of, you have formation of Grignard's reagent, which are synthetically very important compounds. Phenyl magnesium bromide. Clear? Grignard reagent अगले चैप्टर्स में यूज होने स्टार्ट होने, they are very important.
What did we know about Grignard's reagent? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने. They are good synthetic reagent. Grignard's reagent should always be prepared as well as used under dash conditions, anhydrous conditions, because कहीं से प्रोटॉन मिल जाए तो इनका एल्काइल और फिनाइल पार्ट और उधर से H हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं. सो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में यूज होंगे. ठीक है. सेकंड, रिएक्शन विद सोडियम. Reaction with sodium What's reaction का बिल्कुल contemporary reaction is What's reaction में RX होता है, यहां पे बेंजीन X है. ठीक है. ये a haloarine, another molecule of the same haloarine in presence of dry ether yes or no. यहां पे R लगा दो, यहां पे R लगा दो. This becomes what's reaction. So when you carry the words reaction for haloarenes, it has a new name called as Fittig reaction. What would be the name of this compound? कौन बोला डाई? हाँ ठीक बोल रहा है. डाई. Nobody is going to die here. हाँ. डाई. डाईफिनाइल और बाईफिनाइल. Fittig reaction. What's reaction for haloarenes becomes Fittig reaction. Right? अब यहां पे देखो, I took a haloalkane and a haloarene. एक मॉलिक्यूल मैंने हेलोएल्केन का लिया, एक मॉलिक्यूल हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन. यहां पे आर आ जाएगा. अब तो इंटरमिक्स बन गया ना ऑफ द वर्ड्स रिएक्शन बिकॉज हेलोएल्केन है एंड Fittig रिएक्शन बिकॉज हेलोएरीन है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज अब पहले रुक जाना. What will be the two another products of this reaction? आपको पता है ना, ये अपना इंडिपेंडेंट Fittig रिएक्शन कराएगा, ये अपना इंडिपेंडेंट वर्ड्स रिएक्शन कराएगा. और जब दोनों कराएंगे तो आपको पता है इस रिएक्शन में आपके पास एक बनेगा RR प्लस डाईफिनाइल. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ये प्रॉब्लम आती है ना जब हम डिफरेंट हेलोएल्केन्स लिए थे, याद है, प्रोपेन बनाने के लिए या पेंटेन बनाने के लिए. So because this starts independent Fittig reaction, this haloalkane with sodium starts independent Wurtz reaction. So a mixture of the product is formed. तो इतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं रहेगा ये. और इससे हमारे पास क्या बन रहे हैं, क्या बोलेंगे इनको, एल्काइल एराइल हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एक एल्काइल पार्ट है और एक एराइल पार्ट है. समझ आया कुछ? क्या ढूंढ रहे हो बेटा?
कलम गिर गई कलम। हो गया, लिखो कन्वर्ट हाँ सर जी बोल। तो मेरे बारे में यही बोलोगे लोग, क्या बोलेंगे, चने वाला थोड़ी बोलेगा कोई है? चलो बोलो क्या है ये 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 बेंजीन के साथ मैंने आर लगा दिया, अल्काइल ग्रुप। हाँ ये बेंजीन यहां से ये आ रहा है, बन गया ये। उसके बाद मैंने बोला कि इस रिएक्शन में 3 अलग अलग हाइड्रोकार्बन बनेंगे, बिकॉज ये हेलोएरीन अपना अलग से इंडिविजुअल फिटिंग रिएक्शन कराएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल भी तो रिएक्ट करते हैं, बिकॉज रिएक्शन में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसके भी 2 मॉलिक्यूल एनए के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनेगा। ये सारे प्रोडक्ट लिख दिए मैंने। हमने बनाना ये है, वो मेजर प्रोडक्ट है। मगर मैं ये बना रहा हूं कि अगर मैं इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूं इस रिएक्शन से, ये दोनों भी काफी अमाउंट में बनेंगे। राइट, लिखो कन्वर्ट फर्स्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल, बेंजीन टू डाइफिनाइल, एंड सेकंड बेंजीन टू टोलुइन। बेंजीन टू डाइफिनाइल and benzene to toluene. ये पहले हम क्या करेंगे देखना, ठीक है। नो मतलब आपको पता है ये तब चलता है जब हेलो एल्केन हो। अगर आपने हेलो एल्केन बनाना है तो आपको ये रिएक्शन करना पड़ेगा, और बट अगर आपने बेंजीन रिंग पे लगाना है क्लोरीन तो आपको, ठीक है, क्या बन जाएगा? ये ना अभी तो किया रिएक्शन ये। अगर ये रिएजेंट माइंड में नहीं आता, यू राइट डाउन फीडिंग रिएक्शन हियर, द 2 molecules will get clubbed. ठीक है, सेम अब अभी किया ना ये वर्ड्स फीडिंग रिएक्शन, बिकॉज मुझे एल्काइल बार कौन सा लगाना है, CH3। तो मैंने एक ले लिया हेलोएरीन और एक ले लिया हेलो एल्कीन। ये Cl और ये वाला Cl Na के साथ चला जाएगा,
This CH3 will get attached here. Clear है ये? बेंजीन से टोल्यूइन बनाने का एक और मेथड अभी थोड़ी देर में करवाना है मैंने, वो फ्रीडल ग्राफ्ट एल्काइलेशन। ये समझाया? यस और नो? कन्वर्जन में यूज होंगे रिएक्शन तो आपको पता लगना स्टार्ट होगा इनका, अदरवाइज नो। समझ आ गया? डन? नेक्स्ट, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। It's also a Punjabi reaction. Another Punjabi reaction. Reaction is given by iodoarenes only. Iodoarenes ही reaction देंगे। बताओ किसकी तरह लग रहा है ये reaction? It's the Friedrich reaction. Friedrich reaction अगर आप कॉपर के साथ करोगे and specifically iodoarene in a sealed tube, ये निकल गया, क्या बन गया? डाई Ullmann reaction. Ullmann reaction. ULLMANN. Ullmann reaction. Ullmann का नाम उसके पेरेंट्स ने रखा था। फिरोजपुर से था वो। सील्ड ट्यूब। डन है? What is similarity between the Friedrich reaction and Ullmann reaction? Both are given by haloarenes. Both में metal involved है. In both there is formation of diphenyl. The difference is एक में copper use होता है और एक में sodium। एक और Friedrich reaction is open for all haloarenes, whereas Ullmann reaction is open only for iodoarene. You cannot write Cl here or Br here. It is only reaction given by iodoarenes. Right? ये आगे reaction with metals. Metals. और metals के साथ reaction हमारे इसी चैप्टर में है, बाकी अगले 3 चैप्टर में there is no reaction of metals with organic compounds. ठीक है, अब लिखो electrophilic aromatic substitution reactions of haloarenes. Because haloarenes के nucleophilic तो इन्होंने दिए नहीं। एक बार रिपीट। Electrophilic aromatic substitution reactions of haloarenes. Electrophilic aromatic substitution reactions of haloarenes. I will recommend पूरे पेज पे लिखना, ये एक फुल पेज छोड़ दो, थोड़ा बहुत बचा है तो फुल पेज क्या? मतलब एक नया पेज लो। यहाँ पे नो, ठीक है। Electrophilic aromatic substitution reactions of haloarenes. What I am trying to do is, ये मेरे पास एक हेलो
एल्केन है, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिंग के नजदीक जाना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे कैरी नेगेटिव चार्ज। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहते हैं। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इज इट इंटरेस्टेड टू गो? यस और नो? एंड सेकंड इज, इफ इट गोज with respect to x, at what positions will it go? Ortho and para. Do I need to explain that again? So Cl with respect to Cl, one ortho isomer and one para isomer. और उसका रीजन क्या है? एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं ये, ड्यू टू the plus R effect of the benzene ring. पहले नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आया? In the next resonating structure, this shifts here and this comes here. Negative charge reaches here. In the next structure, clear है? So due to the resonance effect of the halogen, which positions are becoming electron rich? And this is the electrophile. It is looking for these positions. So this electrophile. अब यहां पर देखो, ये है benzene. Now this electrophile will attack, given a chance, given a choice. ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करना प्रेफर करेगा या हेलोएरीन के ऊपर? हेलो, मैं बताता हूं, ठीक है? इसका मतलब है, अब बताओ क्यों नहीं इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है? अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज घूम रहा है बेंजीन पे, और इसी नेगेटिव चार्ज के चक्कर में तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग पे। देन व्हाई? बिकॉज हैलोजेंस हैं ये। हैलोजेंस का बेसिक नेचर इज सेल्फिश। अब वे ऑफ पुटिंग इट, यहां पर हैलोजन क्या शो कर रहा है कि आई एम डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट आपको पता है हैलोजन जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये तो नेचर है ही है ना उसका। ये देखो HF, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ है? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। सो नो डाउट बेंजीन जो हैलोजन है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इन पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है। बट दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, बिकॉज हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये सारी की सारी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। तो रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेप्राइव्ड, इलेक्ट्रॉन पुअर। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है? सो हैलोजेंस के दो इफेक्ट हैं, कौन कौन से? माइनस आई इफेक्ट, द रीजन इज देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड प्लस आर इफेक्ट, रीजन इज ड्यू टू देयर lone pair. But the magnitude of this thing is very high. तो एज अ रिजल्ट लग रहा है हमें कि बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, बट इनडायरेक्टली इंटरनली हैलोजन हैज टेकन अप एवरी स्टफ। आई होप आई एम अंडरस्टूड हियर। ठीक है? सो इलेक्ट्रोफाइल बोलता है इस रिंग पे जाने का फायदा नहीं है, हैलोजन हैज टेकन इट ऑल। Whatever I was looking for, वो यहां नहीं है, वो हैलोजन ले चुका है। पर फिर मैंने क्या बोला इलेक्ट्रोफाइल को? आई कंपेल यू टू अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलता है ऑर्थो पैरा पे चले जाता हूं, कुछ तो मिलेगा वहां पे। एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, कुछ तो होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। नेगेटिव तो है ही है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पूरी गई है, बट एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन दीज थ्री पोजीशंस विल बी बेटर। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। अब बताओ, हैलोजन इज रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग? पहले बात बताओ कि रिंग का मतलब सबको पता लग जाता है, बेंजीन। बेंजीन रिंग का एक्टिवेट होना किसके लिए? बिकॉज मैंने आपको बोला बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल बड़ा अपने दिमाग में जोड़ लो। बेंजीन रिंग बिकेम एक्टिवेटेड, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्ड इट। बेंजीन रिंग बिकेम डीएक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोफाइल डिड नॉट अटैक इट। Under this scenario, has it become activated or deactivated? Deactivated.
तो electrophile have no liking for the ring when halogen is present. But compared to do so, they will have to go at what positions? I hope I am understood here. So write down halogens are ring deactivating. Halogens are ring deactivating and orthopara directing. Halogens are ring deactivating and orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Halogens are orthopara directing and ring deactivating in electrophilic aromatic substitution reactions. Reason ye, because there are very high halogens are ring deactivating and orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Right? And reason likho wo, because they have a very high minus I effect. So this minus I effect makes them ring deactivating, and this plus R effect makes them clear. Is it clear? Most of the orthopara जो groups होते हैं वो activating होते हैं, जो meta directing group होते हैं वो deactivating होते हैं. Halogen is a hybrid, is a mix of the two. Orthopara directing होने के बावजूद भी it is ring deactivating. Benzene को electron density देने के बावजूद भी they are ring deactivating. That just shows how electronegativity works here. Am I understood? Done. अब हमने करने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नो डाउट बेंजीन कम रिएक्टिव है हेलोएरिन्स वाला. Now the full page will be used now. इससे बेटर वो लिखने वाला पार्ट हम वहां कर लेते. क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेंगे. Cl2 in presence of anhydrous FeCl3, Br2 in presence of anhydrous FeBr3, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 plus sulfur trioxide, RCl in presence of anhydrous Cl3, CH3COCl in presence of. ठीक है, अब सुनो. Cl positive electrophile generated, attached at Br positive generated. मतलब ये अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने हैं E पॉजिटिव. बट आपको पता है E पॉजिटिव को जाना तो कौन सी पोजीशन पे है. तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं बोलूंगा मुझे प्रोडक्ट का नाम तो पता नहीं है. आई कैन टेल यू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, है ना. कि ClCl है, एक चीज यहां पे आगे लगनी है और एक चीज यहां पे लगनी है. अब क्या चीज लगनी है, दैट इज कि मिला के ये क्या क्रिएट कर रहे हैं. टुगेदर दे आर प्रोड्यूसिंग. पहले दो करो.
So this will be called as chlorination. This is bromination. This is nitration. This is sulfonation. This is Friedel-Crafts alkylation. And this is Friedel-Crafts acylation या acetylation. ये हमने हर फंक्शनल ग्रुप में जाके करना है एंड में. अगले चैप्टर में जब सेम रिएक्शन कर रहे होंगे यहां OH लिखा होगा. डन है, करो कंप्लीट. एक ही रिएक्शन नहीं है ये. आई होप इतना लग जाता है पता. Okay. So first case में with respect to the chlorine, one chlorine will be at ortho position and one will be at ortho dichlorobenzene, para dichlorobenzene, and para isomer will be the main product, major product. यहाँ पे Br will be attached at, यहाँ पे NO2 will be attached. यहाँ पे SO3H. इसको नाइट्रेशन मिक्सचर बोलते हैं. Concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid का mixture is called as nitrating mixture. Nitrating mixture. यहाँ पे at ortho and para position an alkyl group will be attached. और ऊपर वाला जो नीचे वाला रिएक्शन है मैं ऊपर लिखूंगा. ऊपर वाला सबने लिख लिया है, ये वाला. CH3COCl क्या नाम है इस कंपाउंड का? एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल. I want the names. I gave you the compounds. You give me the names. सबका ये NO2 है.
कुछ पता लग रहा है? बोलो नाम। पहले वाला है वो तो हट गया है जो लिखा था, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। उससे अगला था 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। ये दोनों ही ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नेम होते हैं, नाइट्रो भी 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन 1 क्लोरो, और ये तो कोई बता ही नहीं सकता। 500 रुपए का इनाम, यहां मैं रिस्क ले सकता हूं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में बहुत आगे और ये तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो नाम। 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम लिखो पहले, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। हो गया ये। अगर क्लोरीन को हटा दे तो जो कंपाउंड बचता है उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। ये देखना, दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनोन, कीटोन है ये। तो क्या बना ये? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और अगले वाला बन गया 4 क्लोरो एसिडोफिनोन। सल्फोनिक एसिड जैसे COH लगता है तो क्या लिखते हैं? ऑइक एसिड लिखते हैं ना, उसी तरीके SO3H लगेगा कहीं भी कंपाउंड के साथ तो आपने ये वर्ड लगाना है, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जैसे ये कंपाउंड देखो, CH3CH2SO3H, इट इज इथेन सल्फोनिक एसिड। कुछ पता लगा? ये रिएक्शंस कौन से रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक। आप देखोगे कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ बेंजीन रिंग पे आके आपका इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है। और इन रिएक्शंस में हमने 4 बार करने हैं ये रिएक्शंस। बस अगले चैप्टर में यहां पे OH होगा, जहां जहां Cl है OH होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बिकॉज OH ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टली। बस जब थर्ड चैप्टर करेंगे यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा COH, आपके सेम ग्रुप मेटा पोजीशन में लगेंगे, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सेम रिएक्शन। तो इफ यू गेट द थिंग क्लियर, तो हमारे को सिर्फ इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए कि आने वाले ग्रुप को कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट कर रहा है। क्लियर? पर ये बता दूं ये रिएक्शन कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, दे ऑलवेज टेक प्लेस ऑन एरोमेटिक रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन से कंपाउंड देते हैं? एडिशन, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाले कौन से हैं? एल्कीन एंड एल्काइंस। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वर्ड इज ऑलवेज मेंट फॉर alkene and alkynes. Electrophilic substitution always on. Then we had nucleophilic substitution, haloarenes. और आगे जाके आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि देंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब these are specific compounds. Anything anybody wants to ask? ये मिलके क्या कर रहे हैं? ये जनरेट कर रहे हैं।
अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों मिलके ये जनरेट कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन को देखो, अगर मैं यहां से Cl हटा दूं, जस्ट इस रिएक्शन की बात है ना, बेंजीन RCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ये चीज बन जाएगी ना, एक ही बनेगी मतलब। ये रिएक्शन बेंजीन भी तो दे सकता है। जब बेंजीन देगा सेम रिएक्शंस तो क्या होगा आपका, जो ये वाला ये देखो, जब बेंजीन देगा रिएक्शन ये प्रोडक्ट होगी। एक बार देख लो, ये हटाया मैंने। इफ द सेम रिएक्शंस आर गिवन बाय बेंजीन, ये देखो, अब बिकॉज बेंजीन है, इसके 6 के 6 कार्बन आर फ्री। आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है कहीं भी लगा दो। अब देखो, बेंजीन टू टोलुइन बन जाएगा। बेंजीन लिया, आर की जगह क्या कर दिया CH3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहां CH3 आ जाएगा। ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है। सो ये सारे के सारे बेंजीन ने भी दिए थे लास्ट ईयर रिएक्शन। जब बेंजीन रिएक्शन देता है तो हम ये डिस्कस नहीं करते हैं ऑर्थो पैरा, हम सीधा किसी भी कार्बन पे ग्रुप लगा देते हैं। ये वाला याद रखो, ये और ये। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिडोफिनोन। तो बेंजीन टू एसिडोफिनोन, कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। क्लियर? So I'll give you 1 minute to have a look at the things. एक बार देखो, कुछ पूछना है, वर्ड एनीथिंग? अभी इसकी नहीं है, आज मेरे पेपर में क्या था? इसमें पूछा था मेजर प्रोडक्ट, तो अगर हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा ना। इसमें Cl लगा, इसकी बात खत्म। तूने रीअरेंजमेंट वैसे तो नहीं करती कुछ? नहीं, हाँ, पूछ रहा हूँ। ये वो है डार्जेस मेथड। हाँ, हाँ, OH की जगह Cl लगा, खत्म हो गया। है ना, बस सिंपल इसी तरीके से। क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगले वाला उसमें कुछ है ही नहीं है। हो गया? So what's the most important thing about haloarenes? मतलब आपके माइंड में क्या है हेलोएरीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट? दे आर लेस रिएक्टिव देन, देखो नेक्स्ट टॉपिक, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट polyhalogen compounds. Some commercially important polyhalogen compounds. Some commercially important polyhalogen compounds. ठीक है, पॉलीहैलोजन मतलब एक से ज्यादा हैलोजन होगा इसमें। फर्स्ट लिख रहा CH2Cl2, मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं इसका कॉमन नेम, मिथाइलिन क्लोराइड। IUPAC तो पता ही होगा। हाँ, IUPAC डाइक्लोरोमीथेन, बट द कॉमन नेम इज मिथाइलिन क्लोराइड। लिखना कलरलेस, जल्दी से पॉइंटर्स, कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, हाईली वॉलेटाइल। colorless, sweet smelling liquid, highly volatile. Next point, used as a solvent in paint removers. Used as a solvent
in paint removers. Second, as a propellant. Next point, propellant. Propellant क्या होते हैं? आप अपने डीओ या परफ्यूम की बॉटल को प्रेस करते हो, एकदम बाहर आता है, वो कौन प्रोपेल करता है उसको? द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड, दे आर प्रोपेलेंट्स. नेक्स्ट लिखो CHCl3, नेक्स्ट कंपाउंड. CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म. इसके बारे में तो बहुत कुछ पता होगा तुम्हें. सबसे पहले colorless liquid, chloroform, colorless liquid with a sickly smell, जैसी हॉस्पिटल्स में स्मेल आती है गंदी सी, with a peculiar and a burning taste. टेस्ट क्यों नहीं करते इसको? बर्निंग टेस्ट. आपको कैसे Next point, vapors of chloroformed on inhaling cause unconsciousness. Vapors of chloroform on inhaling cause unconsciousness. So it is used in anesthesia. बेहोश करने के लिए यूज करते हैं इसको. सो फॉर सम स्मॉल सर्जरीज पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए इसको यूज करते थे. फिर क्या हुआ, कई बार हमने पेशेंट को क्लोरोफॉर्म दिया, उसकी सर्जरी भी होगी, वो उठा दी बर, ठीक है, उसको बोला हमने कि सर्जरी खत्म हो गया, नो यू कैन वेक अप नाउ. So that's what we are coming to now. देखो chemical properties. Chemical properties, oxidation, chloroform. Chemical properties में first one is oxidation. ये. So it gives us ये सुना ढंग से, क्लोरोफॉर्म के ऊपर यही क्वेश्चन आना है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क इट्स कलर और एवरीथिंग. Chloroform, when exposed to sunlight in presence of air, forms a poisonous gas called as phosgene. So that's why it is not used now, because till the time the patient is given chloroform, he is not getting chloroform, he is getting, because till the time it reaches the patient, it gets oxidized. So you are giving the chloroform to the patient and patient is getting. So no surgery is required. ठीक है? So chloroform on exposure to air and sunlight gets oxidized to a poisonous compound, phosgene. As a result, the use of chloroform in anesthesia has been stopped. Now we have some another reagents doing that work. So ये question आता है, why chloroform is not used in anesthesia? So that is because of its property to form
अब सुनो, क्लोरोफॉर्म का सिर्फ एक ही यूज नहीं है एज एनेस्थीसिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन सॉल्वेंट्स वगैरह यूज होता है, ये हमें यूज करना है ये। बट हमें अगर यूज करना है तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन को रोकना पड़ेगा। सो जब हम क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करेंगे हमें इन दो चीजों पे रोक लगानी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स विच आर स्पॉइलिंग इट ऑल। सो व्हाट डू यू रिकमेंड? Dark colored bottles that will cut it, and the bottle should be filled up to the brim. बिल्कुल ऊपर तक बॉटल भरी होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन एंट्री ना करे। तो लिखो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। First, should be stored in dark colored bottles. Should be stored in dark colored bottles. Second, the bottle should be filled up to the brim. Bottle should be filled up to the brim so that no air can enter. Bottle should be filled up to the brim so that no air can enter. And third, a small amount of 0.6 to 1% ethanol is added. A small amount of 0.6 to 1% ethanol is added to chloroform, which converts the poisonous phosgene into a non-poisonous compound. A small amount of 0.6 to 1% ethanol is added to the chloroform bottles, which converts the poisonous phosgene to a non-poisonous compound. एक बार देखो ये क्या है? What is this? Phosgene, COCl2, क्या डाला? C2H5OH. अब सुनो ये, suppose this is a chloroform bottle. The first preservation I'm doing is it is dark colored. As it is dark colored, no this sunlight is entering. Then the bottle is filled up to the brim. And third क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा इथेनॉल मैंने पहले डाल दिया। वो इथेनॉल क्या करेगा? बाई चांस अगर छोटी मोटी कार्बोनिल बन जाती है, फॉस्जीन बन जाती है, तो बाई चांस दिस बॉटल गेट्स टू एक्सपोज टू एयर और सनलाइट, तो जो भी इसमें फॉस्जीन बनेगी, इथेनॉल उस फॉस्जीन के साथ कंबाइन करके इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग द फॉस्जीन टू अ नॉन पॉइजनस कंपाउंड। तो ये हमने पहले ही प्रिकॉशन रख ली है कि बाई चांस इफ ऑक्सीडेशन अकर्स some chloroform changes too. We have already safeguard, ethanol पड़ा हुआ है, वो आपकी फॉस्जीन को कन्वर्ट कर देगा into a non-poisonous compound which we call as diethyl carbonate. Because यहाँ पे H imagine करो, यहाँ पे H imagine करो, this compound is carbonate ion, CO3 2 negative सुना है ना? So this compound is diethyl carbonate. अब पहले मेरी बात सुनो, why chloroform is not used in anesthesia? Because on exposure to air and sunlight, it forms. What are the three precautions recommended for preservation of chloroform? Dark colored bottles filled up to the brim and a small amount of 1% ethanol.
Why is ethanol added to chloroform bottles? It converts the poisonous phosgene to non-poisonous compound. Reaction नहीं आता छोड़ देना. एक मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, no need to write the reaction if you don't know. ये additional है. But अगर आपने इतना लिख दिया, it converts the poisonous phosgene to a non-poisonous compound. That's more than good. Clear? करो ये नोट. हो गया? व्हाइट बोर्ड पे तो गाना लिख दूंगा, तुम वो भी नोट कर लोगे, है ना? लिखने तो आती है, गाने नहीं आते तो. लिरिक्स तो लिख ही सकता हूं. कौन सा? क्या बोल रहे हैं? जो भी Next, write down carbon tetrachloride, CCl4. CCl4, carbon tetrachloride, colorless liquid, colorless oily liquid, जैसे ऑयली टेक्सचर है, ऑयली लिक्विड, कलरलेस OILY लिक्विड, हाईली इन्फ्लेमेबल, catches fire. Next, uses में as a refrigerant and propellant. As refrigerant and propellant, one of the best non-polar solvents. Underline it. One of the best organic solvents or non-polar solvent. मतलब water का contemporary है ये. Water is one of the best polar solvents, and this is a non-polar solvent. Next, it is used as a fire extinguisher. It is used as a fire extinguisher under the name pyrene. Under the name pyrene. जब फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, इसको अकेले को थोड़ी यूज करेंगे, तो देयर बी समथिंग विल बी मिक्स देयर, सो इट विल बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन. व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका? ड्राई क्लीनिंग. ड्राई क्लीनिंग में इसको यूज करते हैं. ड्राई क्लीनिंग जो सर्दियों में तुम करते हो, बिना नहाए जरा सा पानी टच कर लिया है, सो दैट इज डन है. नेक्स्ट, फ्रियोन्स, FREONS. नेक्स्ट कंपाउंड्स हमने किया पहले किया मिथाइलिन क्लोराइड, फिर किया CHCl3, फिर किया CCl4. नाउ वी कम टू CFCs, फ्रियोन्स. Chlorofluorocarbons, CFCs. Chlorofluorocarbons लिखना. Chlorofluoro derivatives of methane and ethane. Chlorofluoro derivatives of methane and ethane. Next point, highly stable, low boiling point, highly stable, low boiling point,
नॉन टॉक्सिक, लो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, अब देखना ये Freon 11. Freon 11 will be this. Freon 12 will be तो बताओ फ्रियॉन को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पहला डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है? वन मींस वन कार्बन एंड वन मींस वन फ्लोरीन. यहां पे कार्बन तो एक ही है, फ्लोरीन 2 हो गए. सो व्हाट विल बी फ्रियॉन 13? CF3Cl. सबसे इंपॉर्टेंट है ये फ्रियॉन 12. So in the representation of freons, there are two numerical digits being used. The first digit gives the number of carbon atom and second gives the number of fluorine atoms. Right? फ्रियॉन्स की क्या प्रॉपर्टी है? सुनना, फ्रियॉन्स कहाँ यूज होते हैं? सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं. एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेंट्स या प्रोपेलेंट्स यूज करते थे. पर अब आज की डेट में देखना, आप कोई भी डिओड्रेंट खरीदते हो या आपके घर में कोई एसी या फ्रिज आएगा, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग है उसके ऊपर लिखा होता है नो सीएफसीज. नो सीएफसीज because they cause depletion of the ozone layer. Now, how they cause depletion of ozone layer? Because the word I gave you, they're highly non-reactive. So suppose in this air conditioner, suppose if the refrigerant जो cooling के लिए reagent use हो रहा है अगर वो freon है, so that will be exhausted into the atmosphere. At the atmospheric temperature and pressure, freons are highly stable. They will keep on lying as such. Slowly and slowly they will rise to the upper parts of the atmosphere, where in presence of the ultraviolet radiations, they will decompose. यहाँ पे breakup नहीं करेंगे ये. When they rise to the upper parts of the atmosphere, where in presence of the ultraviolet radiations, they will decompose and then they will start the depletion of ozone. So that's why their use in refrigerants has been banned. लिखना इसको. As they cause depletion of ozone layer, as they cause depletion of ozone layer, so their use in air conditioners and refrigerants has been banned. As they cause the depletion of the ozone layer, so their use in air conditioners and refrigerants has been banned. Clear? लिखो last compound DDT. Capital D, capital D, capital T. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT है. इथेन इथेन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो कॉमन नेम है ये.
This is what it is. I want the IUPAC name. Cash prize of 1 lakh rupees. Wrong. अब पहले मेन चेन सिलेक्ट करो. अब करो स्टार्ट. लिखो. कहां से दिखा? कहां से देखा? गलत. एक वर्ड मिसिंग है. ओके, लीव एवरीथिंग. पेरेंट चेन का नाम लिखो. हाउ मेनी कार्बन्स? ये. नो लिसन, इथेन आ गया. दिस कार्बन, बिकॉज क्या 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, पहला नंबर आएगा इसका. इसको बाद में लिखेंगे 1 ट्राइक्लोरो, है ना. इस चीज की बात करो. ये क्या है? इस सब रीजन का नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 4 क्लोरोफिनाइल. कितनी बार आ रहा है? कौन से कार्बन पे? 2,2. बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है तो वर्ड विल बी ब्रैकेट में. व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट? 4 chlorophenyl. Then you reach the easy part. 1,1,1 trichloroethane. तो तुम्हारा ये वाला पार्ट था. पैरा क्लोरोफिनाइल इज टेक्निकली करेक्ट. हाँ, पैरा बोला था ना, पैरा है वो. बट आईयूपीएससी में नहीं आएगा वो. बट अदरवाइज वो ठीक है. दैट इज 4 क्लोरोफिनाइल इज द वर्ड. You just missed it. Wrong is wrong. डन है ये. बहुत बार क्वेश्चन आता है ये IUPAC नेम ऑफ DDT. रट लो इसको. समझ तो आया नहीं होगा है. मतलब ये मेन चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है. तुम इस सब्स्टिट्यूएंट देखो. मेन चेन आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो उसको मेन चेन से ज्वाइन करता है, दैट इज ऑलवेज गिवन द फर्स्ट नंबर 1 2 3 4. 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल. बट दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. क्या सुना हमने DDT के बारे में? कीटनाशक. वन ऑफ द बेस्ट कीटनाशक. ठीक है, फैक्ट है ये. लिखना. insoluble in water and a powerful insecticide. मलेरिया जो इरेडिकेशन थी उसका सबसे बड़ा रीजन इंडिया में ये था. When the malaria used to be a pandemic like COVID was, ठीक है. So this DDT was one of the major. आज की डेट में भी तो यूज होता है ये. ठीक है. अब सुनो. DDT in some developed countries has been banned 50 years back. इमेजिन करना इस चीज को. यूएस वगैरह में DDT 50 years से बैंड है and we the Indians are using it a lot. Now why is that has been banned? Because it is non-biodegradable. Everybody knows what does the word biodegradable means? Push lu. What is biodegradable?
Those substances which spontaneously and by themselves break down into the nature. What DDT suppose आपने use की कहीं पे, that will remain DDT throughout the life. It will not decompose, and by some means it will enter the food chain. And food chain में जब आती है, then it starts getting stored in the fatty tissues of the body. जो human, just please, ये ह्यूमन बीइंग्स के या एनिमल्स के फैटी टिश्यूज में डिपॉजिट होती है, where it has very serious effects on the reproductive system. As a result, it has been banned, but we still are using it. Why? क्या मजबूरी है हमारी? Even if we know that it is highly dangerous for the human beings, फिर भी हम क्यों यूज करते रहते हैं इसको? Because it is very cheap. Because जो इसके ऑल्टरनेटिव हैं, they are very expensive. अब मलेरिया खत्म करने के चक्कर में कंट्री की इकोनॉमी खत्म थोड़ी करनी है हमने, ठीक है? सो लिखना, यूज ऑफ DDT has been banned. Use of DDT has been banned because being non-biodegradable, it has adverse effects on the reproductive system. It has adverse या harmful effects on the reproductive system. एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा, लिखना, गिव अ केमिकल टेस्ट to distinguish between a haloalkane and a haloarine. Give a chemical test to distinguish between a haloalkane and a haloarine. Right, ये देखो, जब केमिस्ट्री में केमिकल टेस्ट बोला जाएगा तो इट मींस एक्सपेरिमेंटली आपको डिस्टिंग्विश करना है. यू कैन नॉट की उसके अंदर एल्काइल पार्ट है, उसके अंदर एरोमेटिक रिंग है. केमिकल टेस्ट मींस यू हैव टू बीकर्स titled as A and B. Out of the two beakers, one is haloalkane and one is haloarine. So by carrying out some tests in the lab, how will you tell me out of A and B which one is a haloalkane and which one is a halo? अब मुझे बताओ, अगर हेलोएल्केन और हेलोएरीन को डिस्टिंग्विश करना है, which property I should be using? Reactivity. Haloalkanes are reactive in SN reactions, haloarenes are not. ठीक है? So the name of the test is silver nitrate test. पहले देख लेना इसको. It has two steps. ये हेलोएल्केन है. So first, to both the samples, we will add aqueous KOH, followed by addition of silver nitrate. या white precipitate मत लिखना, on the better side just write on the precipitate. ये सुन लेना, हेलोएल्केन के अंदर अपने aqueous KOH डाला, followed by addition of silver nitrate, a precipitate is formed. Whereas हेलोएरीन के अंदर aqueous KOH डाला, followed by addition of silver nitrate, no precipitate formed. Can you give me the reason? Because यहां रिएक्शन होगा, यहां क्या बन जाएगा, ROH plus X negative. That X negative plus silver ion will form AgX, which will give the white precipitate. यहां पे
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहां पर मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की कि यहां से रिएक्शन, ये बॉन्ड ब्रेकअप करेगा, ये बॉन्ड ब्रेकअप करेगा, सोल्यूशन में हैलाइड आयन आ गया, और हैलाइड आयन सिल्वर के साथ मिला के AgX बनाता है जो कि प्रेसिपिटेट है। तो यहां पे प्रेसिपिटेट बना, दैट मींस इट इज हेलो एल्केन। यहां पे ये बॉन्ड ही ब्रेकअप नहीं हुआ, ये बॉन्ड ब्रेकअप नहीं हुआ तो X नेगेटिव नहीं बना, X नेगेटिव सिल्वर के साथ कंबाइन नहीं किया, नो वाइट PPT। सो लिखो आंसर, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। लिखना, इन दिस टेस्ट haloalkane or haloarine, in this test haloalkane and haloarine are reacted with aqueous KOH, followed by addition of, just a minute, in this test haloalkane or haloarine are reacted with aqueous KOH followed by addition of AgNO3, formation of a precipitate confirms the presence of the haloalkane. Formation of a precipitate confirms the presence of a haloalkane. Clear? चैप्टर पढ़ के आना है, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराने हैं मैंने इसके ऊपर। चैप्टर इज ओवर।